Hi guys, welcome to EduTap. Today's video is going to be special and entirely different from what you would have seen on YouTube or internet till now with respect to the sources of preparation for RBI Grade B. Sir, ऐसा क्या बताने वाले हैं आप? Well guys, most of the videos that you would have seen on YouTube, they mainly tell you about the books that you can concentrate on to prepare for RBI Grade B. आप खुद search करके देख लीजिए. But in this video, I'm going to tell you about the resources, not the books, which are important for RBI Grade B. That is websites, magazines and newspapers. और ये ज़्यादा important है book से because आपका exam is very dynamic. It is current affairs oriented. So these resources, websites, magazines and newspapers, I would say, are even more important than the books that you would be studying. तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को. Everything I would be telling you is like a golden word, very powerful. Make notes. Before I proceed, subscribe to our YouTube channel and do join our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. We keep sharing some free content on our Telegram channel. तो सबसे पहले तो यही क्लैरिटी दोबारा दे देता हूं कि ये वीडियो इज नॉट अबाउट द बुक्स. वाई? बिकॉज एग्जाम इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं फेज़ 1 में भी, फेज़ 2 में भी. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑल्सो कैन बी डन बेटर इफ़ यू आर थॉरो विद योर करंट अफेयर्स. सो बुक्स पे बहुत कुछ मिलेगा, बट करंट अफेयर्स पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इट्स समथिंग वेरी रेयर एंड आई एम टेलिंग यू in a very detailed manner as in how to use those resources also. So एक छोटा सा टेबल है, बट ये 3-4 मिनट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, it can change the entire strategy, the entire shape of your preparation for RBI Grade B. सबसे पहले बात करते हैं FM करंट अफेयर्स की. Now from where to do FM करंट अफेयर्स, वेबसाइट्स कौन सी यूज करें? The website that you need to use for FM current affair is RBI website itself. और उसके लिए हाउ टू रीड इट गाइज, इफ यू गो टू द आरबीआई वेबसाइट, मेनली फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट व्हाट दे आस्क इन करंट अफेयर्स इज नोटिफिकेशंस. तो ये टैब है नोटिफिकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है. यू विल गेट मंथ वाइज नोटिफिकेशन. अभी ये अगस्त और जुलाई की दिखा रहा है. अगर आपको प्रीवियस मंथ्स की देखनी है, सो फ्रॉम हेयर यू कैन गो टू जून और मई और अप्रैल लाइक दैट. तो इस तरह आप सारी नोटिफिकेशंस यहाँ से पढ़ सकते हैं. वेरी पावरफुल टूल इट इज़. और RBI website पे there are publications. If you go to annual publications, you can read annual report from here. RBI annual report, reports on trends and progress of banking in India. That is also given in your notification. ठीक है. Then in the half yearly publications, there is a financial stability report and monetary policy report. This also is very important for your exam. तो RBI की website से I think इतना पढ़ लें, काफ़ी रहेगा. Apart from that, if you want to go through speeches and interviews, that also you can go through, which are very analytical and can give you good knowledge about the various issues that are happening in the economy. So this is about RBI website. Newspaper कौन सा पढ़ें? Economic Times, Business Standard, Live Mint. There are various newspapers. I think each of them is good in their own sense, but if I have to prefer, I have to tell you one. That has to be Live Mint, because what we have analyzed is that the strike rate of the questions that are being asked in the exam is the best with respect to Live Mint. के Live Mint में से ज़्यादा questions track हो जाते हैं. Now coming on to the magazines, guys. Now why do you need to read magazines? Because see, 50% of your ESI and FM, or if I talk about FM right now, is descriptive. And in descriptive paper, if you can write some analytical points, some thoughtful points, it is always going to give you some value add and the examiner is going to like it. तो इसके लिए for finance, I would say 2 magazines, Capital Market and Business India. ये बहुत अच्छी हैं. The good point is that any regulation, any reforms that are being taken, they would be thoroughly analyzed in these magazines. क्या pros हैं, क्या cons हैं, what could have been done better, what would be the use or the benefit of this. You will get complete clarity. So that was about FM current affairs, guys. Now moving on to ESI current affairs. In ESI current affairs, there are 2 main pillars that you need to understand. Schemes and reports. Majority of the current affairs that are asked in ESI are from schemes and reports. तो यहाँ पे schemes और reports को कैसे cover करें? First of all, I'll come to schemes.
Now, they mainly ask schemes which are in news, or they mainly ask schemes which are covered on PIB in the past 6 to 9 months. कि जो भी न्यूज़ पिछले 6 महीने में PIB पे somehow covered है, न्यूज़ में है, that is more probable to be asked in the exam. तो उसके लिए आप PIB पे जाएं. I'll give you some examples. Suppose I want to see the news of Ministry of Minority Affairs. Let's go to it. LM, Ministry of CEFGHILM. LM. This is here, Ministry of Minority Affairs, and I search all the news for July, right, like this, and here I find a scheme, Seekho or Kamao scheme. This is the scheme. So this scheme is on news on PIB on 28th of July. Right, so this scheme becomes important for me. It can be asked in my exam. तो मैं इसके बारे में जो भी करंट अफेयर्स है, करंट न्यूज़ है, वो मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा. बट दे विल नॉट ओनली आस्क दिस करंट न्यूज़, दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ दैट स्कीम. किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, किस ईयर में हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन बेनिफिशरीज हैं. तो उसके लिए द बेस्ट सोर्सेज के आप इसको विकासपीडिया पे जाकर इस स्कीम को पढ़ें. So I'll open Wikaspedia here. You search this scheme here, right? So a link will open. Click on this link. So here you will get Seekho or Kamao scheme. You can read through it, right? That what does this scheme do? Who can apply? Who are the target beneficiaries? यहाँ से पढ़ सकते हैं. नहीं तो you go to the Ministry of Minority Affairs website और वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. Right, so this is how you go through PIB, and what you find in PIB, you have to further search that scheme on Wikaspedia or the actual ministry website to read about that scheme in more detail. ठीक है guys, so that was about how you will do schemes. PIB and Wikaspedia is the best source. Now coming on to the reports, Hindu is the best source. Whatever reports are being covered in Hindu, United Nations की report है, World Bank की report है, all the important reports normally gets covered in Hindu newspaper. तो आप हिंदू न्यूज़पेपर्स में से उस रिपोर्ट की डिटेल पढ़ लें. फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज़ अ रिपोर्ट कवर्ड इन हिंदू न्यूज़पेपर. ठीक है, July 7th. This is basically regarding undernourished people in India. This is a UN report, so just read it from here. Though there would be a detailed report on this on the United Nations website, but that would be too detailed. You will not be able to read it. तो यहाँ पे काफ़ी डेटा दिया हुआ है, आई थिंक 3-4 पेज का. आप इसी को पढ़ लें. दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू टू क्रैक क्वेश्चंस इन द एग्जाम. 4 आएंगे तो शायद 4 ना हो, लेकिन 3 हो जाएंगे. दैट इज़ मोर देन एनफ. Right, so this is you cover schemes and reports using these websites and newspapers. Again, ESI paper has a descriptive component where current affairs knowledge, the analytical knowledge on these current affairs can be really helpful. तो उसके लिए ये Economist magazine है, which I would recommend. Right, very good magazine. It covers social issues also. It covers the economy and finance related issues also. तो आप इसको पढ़ सकते हैं. मेरी favorite है ये. थोड़ा कॉस्टली है Economist magazine, but if you can afford, go through it. Otherwise, I think the monthly issue which comes is given free for some days. Then you can read within that time. Now coming on to the descriptive English part. Descriptive English is not something that you basically will read something and exactly the same thing would be asked in the exam. But still you need to increase your reading speed, you need to increase your comprehension power. That will come through reading. You will also learn expression, how to express yourself through reading. So I would say just read Live Mint and Hindu editorials on a daily basis. That is going to help you immensely in descriptive English. और एक important website बताता हूँ descriptive English के लिए, app.grammarly.com. सो यहाँ पे ओपन है. सो ये grammarly.com पे आप जाएंगे. व्हेन यू मेक योर अकाउंट, इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू पेस्ट योर कंटेंट एंड सी योर मिस्टेक. सपोज यू हैव रिटन वन आंसर और वन essay. Just copy it from there, wherever you have written it, paste it there, and this website grammarly.com will show you in detail what are your spelling mistakes. So here it is showing that particular there is a spelling mistake, right? That spelling mistake is there. Then it will also show you your punctuation mistakes. For example, it says that it appears you have improperly spaced some punctuation. तो यहाँ पे वो दिखा रहा है. ठीक है, if you go to this, in fact,
it says that this phrase is not necessary. So like this, it will show you all the errors, your grammatical errors, your punctuation errors, your spelling errors. I think this can be a big boost in your writing, because these are the most common errors which we make and we don't realize. We keep making them only hoping कि एग्जाम में नहीं होंगी, but एग्जाम में भी होती हैं, and then our numbers are cut down by a huge margin otherwise that we would have been able to score. तो spelling mistake पे, punctuations पे, grammatical mistakes पे ध्यान देना है. Content भी important है, लेकिन descriptive English में तो ये errors I think they are not tolerable. बाकी कोई ऐसा मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक दैट्स इट. आप ये सोर्सेज फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए, दैट इज़ मोर देन एनफ. हिंदू, लाइव मिंट, आरबीआई वेबसाइट, पीआईबी, विकासपीडिया. आई थिंक if you read this, cover this thoroughly, you will be able to cover most of the current affairs that will be asked in the exam. अब पॉइंट ये आता है कि सर ये सारा कुछ करना क्या पॉसिबल है? विल आई बी एबल टू कवर ऑल दिस? आई वुड से इट्स रेदर impossible to cover all this on your own, because to read Live Mint, Hindu, RBI website, PIB, Vikaspedia on daily basis, then make your own notes, right? And filter out what is relevant, what is irrelevant. It's going to be very much time consuming. You will feel like you are working on a job while you are compiling all this. So I would not suggest to read it by your own. Rather, I would suggest that you read some compiled magazines which are compiling RBI notifications for you, PIB news for you, all the schemes for you. We do it in our enrolled batches, but you need to find some way. ठीक है, तो खुद से तभी करिएगा अगर बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं. देन ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट यू कैन मैनेज इट समहाउ. तो ये सब कुछ करिए. और जीए के लिए क्या सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए? देखिए, जीए में भी जो फेज़ 1 में जीए आता है, देयर ऑल्सो दे विल आस्क यू आरबीआई नोटिफिकेशंस विच कैन बी कवर्ड फ्रॉम एयर. दे विल आस्क यू स्कीम्स विच कैन बी कवर्ड फ्रॉम एयर. दे विल आस्क यू रिपोर्ट्स which can be covered from here. They will also ask you some basic news like sports awards, important days and themes, some important appointments, पार्टनरशिप्स, वो भी सारा पूछेंगे. वो भी आप हिंदू में से कवर कर सकते हैं, लाइव मिंट में से, बट फॉर दैट यू कैन रीड एनी बैंकिंग कंपाइल्ड मैगजीन. जो भी IBPS PO, RRB PO, SBI PO के लिए मैगजीन्स आती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं. इट विल हेल्प यू कवर द GA, अराउंड 30 मार्क्स ऑफ GA आउट ऑफ 80 फॉर फेज 1. जो बाकी 50 मार्क्स की आती है, दैट इज़ बेसिकली योर द सेम GA जो कि मैं आपको बता रहा हूँ. RBI नोटिफिकेशंस, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो आपकी इस बैंकिंग मैगजीन से नहीं होगी. यू हैव टू प्रिपेयर इट द सेम वे यू वुड बी प्रिपेयरिंग द फेज 2 करंट अफेयर्स. ठीक है, सो दैट्स इट गाइज. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. डू लिसन टू इट केयरफुली. दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट्स. इसको अच्छे से पढ़ो और इम्प्लीमेंट करो. आई होप आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे इससे, एंड योर प्रिपरेशन विल गो इन द राइट ट्रैक. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.